Okay, chalo. Welcome to day 5 of Pathfinder batch. I hope you guys are having fun. Different exercises, a lot of. I try to see जब अगर तुम मेरे साथ काम करते हो या मेरे साथ काम करोगे, one thing you gotta know is my job is to confuse you. Particularly in Pathfinder batch, कई बार मैं I give out statements which are contradictory in itself. Or sometimes I'll say that this is, let's say for example, sometimes I say X, right? Whatever X Y Z thing is, and sometimes I'll say exactly opposite to that. Why that is important? Because if I give you only one statement कि यही सही है, what will happen is कि you will accept it as it is, correct? Which is something that I don't want. I want you to have contradictory statements so that you can make your own decisions, correct? कि तुम्हें क्या सही लगता है, क्या गलत लगता है, और उसके हिसाब से तुम तुम्हारा अंडरस्टैंडिंग बढ़ाओ कि ठीक है, ये सर जो बोल रहे हैं ये सही है कि गलत है, एंड देन दैट्स हाउ यू डेवलप योर ओन कॉन्शियसनेस. Let people come. I think we will start. We'll wait for 30 or 20 first. I wanted to talk about creativity के बारे में और बात करूँगा. We'll start today's session. So, according to me, particularly, क्रिएटिविटी के बारे में कई लोग बात करते हैं. क्रिएटिविटी ये होता है, वो होता है, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए. बट आई एम रीडिंग दिस बुक कॉल्ड क्रिएटिविटी. उसका नाम मैं शायद नहीं बताऊंगा तुम्हें. वेरी इंटरेस्टिंग बुक. उसमें एक चीज कहा गया है कि क्रिएटिविटी जो है या जो द एबिलिटी टू क्रिएट समथिंग इज ओनली एक्सेप्टेबल जब कुछ ऐसा चीज क्रिएट करते हो जिसका इंस्पिरेशन डायरेक्टली किसी चीज से नहीं है, या फिर ऐसा चीज जिसमें किसी का डायरेक्ट इन्फ्लुएंस नहीं है. देखिए, जैसा हमने पहले सेशन में बात किया कि देयर आर गोइंग टू बी सम कॉमन. एक तुम्हें कुछ कंसेप्ट लेना पड़ेगा, उसी के ऊपर तुम बिल्ड कर सकते हो, बट इट शुड नॉट बी कॉपी. लाइक अगर तुम हमें बहुत अच्छा पोर्ट्रेट करते हो या कोई भी चीज करते हो, आई ऑलवेज, अगर स्किल लेवल अच्छा है बहुत अच्छा है, बट समवेयर डाउन द लाइन कहीं ना कहीं अगर तुम आर्किटेक्चर में जा रहे हो, डिजाइन में जा रहे हो, फैशन में जा रहे हो, तो तुम्हें कंसेप्ट, एक जो चीज होता है वो तुम्हें बहुत अच्छे से समझना पड़ेगा कि कंसेप्ट क्या होता है ना. कंसेप्ट ये होता है कि तुम्हारा थॉट प्रोसेस क्या है. आई ऑलवेज आस्क यू टू राइट डाउन अ राइट कि मुझे बताओ कि इसका एक्सप्लेनेशन क्या है, क्यों तुमने किया, किस वजह से किया. सो कंसेप्ट इज समथिंग विच इज योर ओरिजिनल आइडिया विच इन्फ्लुएंसेस योर डिसीजन मेकिंग इन द प्रोग्रेस, करेक्ट? फॉर एग्जाम्पल, इफ यू वांट टू क्रिएट अ 2D कंपोजिशन, तो या कुछ भी, अगर तुम पेंटिंग कर रहे हो, तो whenever you do a painting you have to have a logic कि बाबा ये जो मैंने यहाँ पे कलर यूज किया है या टेक्सचर यूज किया है, ये मैंने रेड कलर यहाँ पे काफी स्मूथ वे में दिया और यहाँ पे उसको टेक्सचर थोड़ा खराब कर दिया या रफ कर दिया, तो वो क्यों किया, उसका लॉजिक होना चाहिए. वो क्यों किया उसके हिसाब से, और वो आता है कंसेप्ट से कि ये चीज ऐसी है बिकॉज इसका लॉजिक ये है. करेक्ट? तुम आर्किटेक्चर में जब जाओगे, क्योंकि आज हम आर्किटेक्चर का बात कर रहे हैं पर्टिकुलरली, जो लोग आर्किटेक्चर पे इंटरेस्टेड है उनके लिए बात. जब तुम किसी भी चीज के बारे में, जब तुम आर्किटेक्चर में जाओगे तो तुम्हें फर्स्ट ईयर से ही ये पूछा जाएगा कि उसका कंसेप्ट क्या है, कंसेप्ट बताओ, कंसेप्ट बताओ. और ये इम्पोर्टेंट भी है बिकॉज अगर मान लो मैं 40 लाख का घर डिजाइन कर रहा हूँ या 1 करोड़ का घर डिजाइन कर रहा हूँ, ठीक, और मान लो मैं तुम्हें 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख रुपए दे रहा हूँ कि ठीक है, मेरा इतना इतना बजट है और तुम्हारा फीस 5 लाख रुपए है, ठीक है, ओके. एंड आई आस्क कि बाबा तुमने जो मुझे घर का प्लान दिया है उसमें यहाँ पे ये चीज क्यों है, व्हाई इज दिस थिंग हियर, ठीक है. आई एम नॉट सेइंग कि हाँ, मतलब मैं ऐसा तो सवाल नहीं पूछा कि ये टॉयलेट में टॉयलेट क्यों है, नॉट लाइक दैट. बट लेट्स से फॉर एग्जांपल इफ आई से कि इस रूम में ये फ्लोरिंग क्यों है, या इस रूम में ये टेक्सचर क्यों है, या इस रूम में ऐसा ही क्यों है, और तुम अगर ऐसा बोलोगे कि ऐसे ही मजा अच्छा लग रहा था, तो थिंक अबाउट इन माई टर्म्स कि अगर मैं 5 लाख रुपए मैं दे रहा हूँ, तो मैं इस चीज के लिए तो नहीं दे रहा कि तुम बोलोगे कि हाँ ये अच्छा लग रहा था. आई वॉन्ट टू हियर समथिंग कि ये क्यों ऐसा है, बिकॉज
वॉट एवर यूर डिजाइन इज गोइंग टू बी, पर्टिकुलरली आर्किटेक्चर में तुम्हारा मान लो अगर तुम किसी घर का इंटीरियर डिजाइन कर रहे हो तो वो आदमी कम से कम 5 साल तो उस इंटीरियर में रहेगा ना, उस ऐसे नहीं कि आज डिजाइन कर दिया कल से फिर से चेंज कर दिया, तो ये तो नहीं हो सकता. सो वी गॉट टू हैव कंसेप्ट कि वो चीज वैसी क्यों है, एंड दैट्स व्हाट वी आर गोना लर्न टुडे कि कंसेप्ट कैसे डिराइव किया जाता है. नंबर 1. नंबर 2, ओके थोड़ा सा और, बिकॉज मैंने कहा था ये लॉन्ग सेशन होने वाला है एंड यू नीड अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन. इसके पहले मैट्रिक्स करके एक मूवी आया था कुछ डिकेड्स पहले, अगर तुमने देखा होगा. मैट्रिक्स का फंडा ये था, उसमें ऐसा बताया गया है कि वॉट एवर यू आर एक्सपीरियंसिंग राइट नाउ, ठीक है, तुम जैसे मान लो तुम मेरा आवाज सुन रहे हो, करेक्ट, वो आवाज तुम तो कैसे जा रहा है, मैं यहाँ से बोल रहा हूँ, सिमुलेशन, यस. मैं तुम्हारे कंप्यूटर से कुछ आवाज आ रहा है या तुम्हारे फोन से कुछ आवाज आ रहा है, वो तुम्हारे कानों में गिर रहा है, बट अनलेस अंटिल इट गोज टू योर ब्रेन एंड अनलेस अंटिल इट इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स, तुम उसको एक्सपीरियंस नहीं कर पाओगे इफ यू टच योरसेल्फ लाइक दिस. तो इसका जो फीलिंग है वो तुम्हारे ब्रेन में जब तक एज ए इलेक्ट्रिकल सिग्नल नहीं जाता तुम उसको एक्सपीरियंस नहीं कर पाओगे, है ना. अगर मैंने ये हाथ कट कर दिया यहाँ से और इसको देयर इज नो कनेक्शन, और फिर मैं इसको टच करूँ तो फिर भी ये सेंसेशन यहाँ पे नहीं जाएगा बिकॉज देयर इज नो इलेक्ट्रिकल कनेक्शन. तो मैट्रिक्स मूवी का फंडा ये था कि whatever you are experiencing right now is a stimulation, जहाँ पे तुम्हारा ब्रेन जो है वो एक पॉड में रखा हुआ है जहाँ पे whatever they want you to experience you are experiencing through emotional responses. मतलब तुम्हें कुछ इलेक्ट्रिक सिग्नल्स दिए ये सुनने के लिए तो तुम वो सुन रहे हो, which is pretty much the possibility. Anyway, so see, as humans we are emotional beings. हम किसी भी चीज को लॉजिकली नहीं a lot of decisions that we make in day to day life are emotion based. एक काफी 2-3 एग्जांपल मैं देता हूँ तुम्हें. जैसे पहला, मुंबई करके एक मूवी है, ठीक, उसमें या आई थिंक उसमें वो डायलॉग है कि दूध गाय का हो या भैंस का हो, या गाय का नहीं हुआ तो भी चलेगा, भैंस का हुआ तो भी नहीं चलेगा, बट चितड़े का होना चाहिए. तो बिकॉज वी हैव सम इमोशनल लॉयल्टी टू दैट पर्टिकुलर ब्रांड. एग्जाम्पल नंबर 1, छोट काफी सिंपल सा एग्जाम्पल. अनदर एग्जाम्पल, 1920s में आई थिंक सो, जब सिगरेट्स का मैं बात करने वाला भाई, तो जब सिगरेट्स का जब ये हुआ था तो सिगरेट बेसिकली जब काफी स्टिमुलेशन, सो जब सिगरेट ये बड़ी बड़ी कंपनीज बेचती थी तो मोस्टली मैन यूज टू स्मोक, फीमेल डिड नॉट यूज टू स्मोक. और एज अ कंपनी हु मेक सिगरेट, मेरे लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट था कि यार दुनिया में जितना भी जनता है उसमें से 50% ही मेरा कस्टमर है. बेसिकली वुमेन डिड नॉट यूज टू स्मोक. आई एम नॉट सेइंग इट्स अ गुड और बैड थिंग, आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जांपल. तो पहले मार्केटिंग ऐसे हुआ करता था कि तुम फैक्ट्स बताओ कि ये दूध, मतलब जैसे तुम्हें दूध बेचना है तो तुम्हें दूध अच्छा है, ये है, ये है, ये है, इसमें ये फलाना डिब्बा है. ये फैक्ट्स एडवर्टाइज, मतलब सिगरेट के बारे में फैक्ट्स इसमें डाले गए कि सिगरेट मेक्स यू डू दिस, इससे ये होता है, फॉल्स फैक्ट्स, बट फैक्ट्स के आधार पे सिगरेट बेचने का ट्राई किया गया. डिड नॉट रियली वर्क. देन देयर केम अ मार्केटिंग पर्सन, उसने क्या किया 1921 में, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, एक परेड हो रहा था, उसमें व्हाट इट, उसने 5-10 फीमेल्स को ये किया, टारगेट किया कि बाबा तुम उस परेड में जाके जहाँ पे हजारों लोग चलते हैं, तुम वहां पे जाके यू एट सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम यू हैव टू स्टार्ट स्मोकिंग. और उन्होंने ऐसा किया कि कुछ फोटोग्राफर्स को चैलेंज दिया कि तुम उनका फोटोग्राफ खींचो, और फिर जो फोटोग्राफ है वो पेपर में पब्लिश किया उन्होंने, जितने भी पब्लिशर्स थे. और उसका जो टाइटल है वो इस तरह से नहीं दिया कि देखो देखो लड़कियां या वुमेन आर स्मोकिंग. आई एम नॉट विद और अगेंस्ट स्मोकिंग, आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जांपल कि हाउ इमोशन अफेक्ट्स अस. और इसको मार्केट इस तरह से क्या किया गया था कि दीज वुमेन आर लाइटिंग द टॉर्च टू फ्रीडम. ओके, उस तरह से इसको मार्केट किया गया था. एंड व्हेन इट वेंट आउट इन द मार्केट, फीमेल्स उस चीज की तरफ देखने का जो नजरिया है वुमेन
स्मोकिंग सिगरेट, उस चीज को देखने का जो नजरिया है वो चेंज हो गया. वुमेन started to take it as a form of freedom, as a form of expression, as a form of feminism. मैं किसी चीज को ऑफेंड या डिफेंड करने का नहीं, आई एम स्टेटिंग इवन इवेंट की वो होगा. आफ्टर दैट a lot of women also started smoking because of one particular emotion कि यार ये experience था और ये ऐसा. तो we always make decision about emotions. अगर कोई चीज मुझ में इमोशनल रिस्पॉन्स नहीं पैदा करती है तो मैं उसको ये नहीं करूंगा. लेट्स टेक अनदर एग्जांपल. आर्किटेक्चर और इसका बात करते हैं, ठीक है. लेट्स से तुम एक ऐसी जगह पे जाओ जो बहुत मतलब व्हेन यू गो टू अ रूम और वो इतना चौड़ा जगह है जहाँ पे तुम हाथ नहीं पैस मतलब फ्रॉम दिस टू दिस तुम्हारा हाथ नहीं, छोटा जगह है, काफी छोटा जगह है, तो यू डोंट फील वेरी कंफर्टेबल देयर. इसको क्लस्ट्रोफोबिया कहते हैं, विच इज फियर ऑफ स्मॉल स्पेसेस. तो यू डोंट वांट योर हाउस टू बी क्लस्ट्रोफोबिक. ठीक है, तुम छोटा छोटा घर नहीं चाहते. सी कोजी होना एक अलग फीलिंग होता है और क्लॉस्ट्रोफोबिया इज ऑल्सो अ वेरी अनडिजायरेबल फिनोमिना. तुम ऐसे रूम में नहीं बंद होना चाहते जहां पे तुम्हें ऐसा लगे कि मैं बंद हूँ इस बिल्डिंग में. ओके, इवन इफ द डोर इज ओपन यू डोंट वांट टू बी प्लेस इन प्लेस और स्पेस पर्टिकुलरली जहां पे तुम्हें क्लॉस्ट्रोफोबिया है. साथ ही साथ तुम ऐसे जगह पे भी नहीं जाना चाहते जो बहुत ओपन है. फॉर एग्जाम्पल इफ जैसे बेडरूम का साइज जनरली 3 मीटर है, 4 मीटर या 5 मीटर बाय 5 मीटर, बहुत बड़ा हो गया. तो बट अगर तुम्हारे पास बहुत पैसा है और मैंने तुम्हें बोला कि बाबा तुम्हारा बेडरूम जो है वो 20 मीटर बाय 20 मीटर बनाऊंगा मैं, तो यू विल ऑल्सो नॉट फील वेरी कंफर्टेबल. बिकॉज इफ इमेजिन इट लाइक दिस, मैं तुम्हें एक क्रिकेट स्टेडियम में लेके गया, ठीक है, वहां पे 10,000 लोग बैठे हुए हैं और तुम्हें मैंने एग्जैक्टली सेंटर में खड़ा कर दिया, तो यू वुड नॉट फील सेफ बिकॉज देर इज अ चांस कि तुम्हें पीछे से आके कोई अटैक कर दे. इट ऑल्सो इज अ रीजन बिहाइंड द वे वी चूज रेस्टोरेंट्स. करेक्ट, रेस्टोरेंट कई बार तुमने देखा होगा जितना ये जो है दिस इज कॉल्ड अ बैकरेस्ट, ये जितना बड़ा होगा अगर ये बैकरेस्ट नहीं है आई ऑलवेज एक तो मैं अनकंफर्टेबल रहूंगा बिकॉज ऑफ द फॉर्म ऑफ दिस, क्योंकि मुझे हमेशा आई हैव टू मेक श्योर कि माय बैकबोन इज स्ट्रेट which gets kind of comfortable after some time. But if I have this, एक साइकोलॉजिकल फिनोमिना होता है कि कोई मेरे पीछे से मुझे आके अटैक नहीं कर सकता. करेक्ट, ये तुम देखना कभी तुम किसी रेस्टोरेंट में जाओ, मैकडोनल्ड्स में, किसी भी मैकडोनल्ड्स में जाओ और यू विल फिगर आउट कि लोग वहां पे ही जाके बैठते हैं जिसको बैकरेस्ट है. बिकॉज वी फील दैट अगर उसका बैकरेस्ट होगा तो somebody cannot come from back and stab at you. और ये जितना ऊपर होगा उतना पीपल फील सेफ. बिकॉज हमारे लिए बिकॉज मैं आगे पीछे से कोई मुझे अटैक करे, ये हमारा इंस्टिंक्ट है, बेसिक इंस्टिंक्ट है. जनरली अगर इफ यू वांट टू बी इन अ स्पेस, अगर मैं तुम्हें कहूँ कि तुम किसी स्पेस में खड़े हो जाओ, तो यू विल ऑलवेज ट्राई टू फेस द मतलब जो एंट्री है तुम उसको फेस करोगे. यू डोंट वांट टू प्लेस, जैसे तुम्हारा बेडरूम का केस है, करेक्ट, तुम ये कभी नहीं चाहोगे कि तुम्हारा मतलब लेट मी शो यू समथिंग. Can you see this? Yes. Yeah. Yes. Generally, Yes. so मान लो this is your room, correct? And this is the door. So, इस तरह से तुम्हारा दरवाजा है. तो मान लो तुम्हारा स्टडी टेबल है, तो यू विल मोस्टली पीपल नेवर और वेरी बहुत कम लोग हैं, जैसे यहाँ पे मेरा टीवी हो गया या मेरा लैपटॉप हो गया और ये मेरा स्टडी टेबल है और यहाँ से एंट्री है तुम्हारा एंड दिस इज योर चेयर. ये प्लान में ऊपर से देख रहे हैं, तो यू विल जनरली इस सेटिंग में लोग कंफर्टेबल नहीं होते. पीपल आर कंफर्टेबल इन अ सेटिंग लाइक दिस, जहाँ पे ये तुम्हारा स्टडी टेबल है, यहाँ पे ऐसा है, या फिर ये दिस इज द मोस्ट कंफर्टेबल थिंग. इसका 2 रीजंस है. बिकॉज अगर मैं इस सेटिंग में रखता हूँ टेबल को तो देर इज नो प्राइवेसी. कोई भी आके देख सकता है कि तुम लैपटॉप पे क्या करते हो, तुम कुछ भी कर रहे हो, बट यू डोंट वांट पीपल टू सी.
इस केस में मेरा प्राइवेसी थोड़ा सा बच रहा है, और इस केस में वॉट एवर आई एम डूइंग ऑन माई लैपटॉप इज नॉट विजिबल। इसका साइकोलॉजिकल इंस्टिंक्ट ये है कि इफ आई एम बिजी हियर somebody can sneak around and kill me. This is the instinct. अगर मैं यहाँ पे कुछ कर रहा हूँ तो if somebody comes and tries to kill me, I can see him, और इस केस में तो मैं डायरेक्टली देख सकता हूँ कि कौन आ रहा है, करेक्ट? So this is how we understand spaces around us, and spaces are the way a space is designed. कई बार spaces जो हैं, whatever spaces are there, they make us feel in a certain way. जैसे अगर तुम मान लो if you go to a 5-star hotel, तो they make you feel the way the space is designed, it makes you feel important. अगर तुम किसी अगर तुम किसी ऐसी जगह पे जाते हो where you are not comfortable, so you will not like that space. So सबसे पहले तो तुम्हें space क्या होता है ये समझना बहुत important है. Space is not always a built space, correct? Space जैसे whatever you take, जैसे my room is a space. The staircase, जो staircase, that is also a space where we wherever we go. Maybe a kirana store is also a space, and every space makes us feel something about ourselves, because at the end of the day कहीं ना कोई space जो है it inspires emotional response in me, और उस emotional response के हिसाब से मैं ये डिसाइड करूंगा कि मुझे उस जगह अच्छी लगती है या नहीं लगती है, करेक्ट? ये तुमने कई बार एक्सपीरियंस भी किया होगा. तुम अगर किसी चर्च में तो यू फील इन अ सर्टेन वे, लेकिन वही फील तुम्हें एक रेस्टोरेंट में नहीं आएगा. देयर आर लॉट ऑफ एलिमेंट्स ऑफ आर्किटेक्चर, स्पेस किस तरह से है, क्या है, कैसा है, बहुत सारी चीजें, बट एवरी स्पेस हैज द ability to make you feel in a certain way. जैसे आई टेल यू व्हाट, सो आई लव ड्रिंकिंग टी. ओके, मुझे चाय पीना बहुत पसंद है, और व्हेनेवर आई ड्रिंक टी इट्स लाइक अ ब्रेक फॉर मी, कि मुझे ब्रेक चाहिए लाइफ में. सो जैसे मान लो मैं आई एम गोइंग समवेयर, आई फील लाइक आई नीड अ ब्रेक, और मुझे कोई मीटिंग के लिए 10-15 मिनट है, मुझे चाय के आई नीड टू गो आउट एंड ड्रिंक अ टी. सो लेट्स से आई हैव टू ऑप्शन. फर्स्ट ऑप्शन इज, या फिर तुम्हारे केस में भी ये करो कि एक जगह है जहाँ पे सिर्फ चाय का ठेला है, ठीक है, और वहाँ पे बहुत सारी रहदारी है, मतलब लॉट ऑफ पीपल आर वॉकिंग बाय, मतलब तुम चल रहे हो, बार बार कोई तुम्हें डिस्टर्ब कर रहा है चाय पीने के बीच में. और दूसरा जगह ऐसा है कि देयर इज अ स्पेशल एक जगह है जहाँ पे तुम्हें डिस्टर्बेंस नहीं होगा, तुम आराम से बैठ के अपना चाय पी सकते हो, नोबडी इज गोइंग टू डिस्टर्ब यू देयर. तो विच काइंड ऑफ स्पेस विल यू चूज? तुम ऐसा स्पेस चूज करोगे जहाँ पे धूप आ रहा है, लोग, बहुत आवाज हो रहा है, पीपल आर डिस्टर्बिंग यू, या फिर तुम ऐसा स्पेस, छोटा सा कोजी स्पेस चूज करोगे पे वो छाव है, मे बी सम प्लांट्स आर केप्ट देयर एंड यू कैन कंफर्टेबली बैठ के तुम चाय पी सकते हो. तुम कौन सा स्पेस चूज करोगे, पहला या दूसरा? दूसरा. दूसरा जनरली मैं Second. second one. Why? Because it makes you feel that you are safe. Because let me give you a very interesting this thing. Anybody has a dog, pet dog? किसी के घर में dog है? They can relate it with interesting way. When you take your dog for a walk, correct? When he's taking what do you say? When he's doing his business, correct? Whatever, you know what I mean by that. So whenever he's doing his business, he is always looking at you, and you get very uncomfortable with that. Here, you are doing your business. Take a look. Why are you looking at me? The reason why he's looking at you is because at that particular point of time, he's very uncomfortable, and he wants to make sure कि तुम्हारा ध्यान उसकी तरफ है, so that he can be safe. Because whenever he is in that particular condition, in that particular position, he is very vulnerable. Right? He wants you to make sure that you are looking at him, and if anything comes up that is dangerous to him, you will protect him. So as a human being, we always want to feel safe in whatever space that we are given. Also. So what I wanted to establish is any space has a feeling associated with it. जैसे एक और एग्जांपल मैं देता हूँ.
सबके like I think everybody has their own bedroom, correct? या you share a bedroom with them, with them. तुम उसको तुम्हारे हिसाब से अरेंज करते हो, correct? जनरली मैं बात कर रहा हूँ, बट और यू आर कंफर्टेबल इन दैट पर्टिकुलर स्पेस बिकॉज वो तुम्हारे हिसाब से तुमने सेट किया है. अगर मैं आता हूँ तुम्हारे घर पे और बोलता कि मैं ना एक काम करूंगा, मैं पूरा मतलब बेड की जगह टेबल रख दूंगा, टेबल की जगह बेड रख दूंगा, कलर चेंज कर दूंगा, टेक्सचर चेंज कर दूंगा, बड़ा बड़ा साउंड लगा दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, एंड आई आस्क यू टू गो एंड स्लीप इन दैट स्पेस. सी, क्या मेरे रूम के वॉल्स चेंज हुए? नहीं. मेरा बेड चेंज हुआ? नहीं. बट व्हाट हैपेंड इज आई चेंज्ड the feeling of the space, and you might not feel comfortable in that space. You might feel comfortable, you might not feel comfortable, and it is your job as an architect or as a designer to induce the experience that is needed for that particular space. उस space का जो experience तुम्हें चाहिए होता है वो तुम्हें डिजाइन करना, but you should be able to design that space according to the emotion that is needed. तुम तुम्हारे बेडरूम का जो फील है वो तुम किसी मल्टीनेशनल ऑफिस के वर्किंग स्पेस पे नहीं डाल सकते या मीटिंग रूम में नहीं डाल सकते. वेरी सिंपल एग्जांपल, तुम तुम्हारे लिविंग रूम में डेस्क और बेंच नहीं डालोगे, करेक्ट? साथ ही साथ तुम तुम्हारे क्लासरूम में बीन बैग्स नहीं डालोगे बिकॉज देयर इज अ सर्टेन इमोशन दैट यू वांट टू इवोक. नाउ what we are going to do today, I'm going to give you a explanation कि कैसे करना है आज का assignment. Maybe I'll take 2-3 assignments. What we are going to do is we are going to take a poem. I think you have your poems with you today. मैंने बोला था कि poem लिखना है. Yes. Yeah. What we are going to do, we are going to take a poem. Okay, कोई भी एक या दो करेंगे. We are going to understand the emotion that that poem has, and we are going to design a space according to that emotion. Okay, so we are going to take something. You understand what is tangible and what is intangible? Intangible is something that I cannot see or I cannot touch or I cannot, mostly जैसे my voice is intangible, correct? या फिर emotions are intangible. For example, let's say if I'm very angry at you, so that is a intangible thing. But when I convert that intangible thing into a tangible thing, for example, if I convert, design a space which induce anger in me, so that is the tangible aspect of that intangible feeling. And at the end of the day, if you want to be a designer or architect or fashion designer or artist, the whole point is to be able to convert something intangible into something tangible. Okay, so this is what we are gonna do. It can be a little difficult, but trust me, this is a very interesting exercise. अगर तुम ये समझ जाते हो कि मुझे ये जो फीलिंग है, ये जो intangible feeling है, जो concept है, इसको मैं tangible space में कैसे convert करूँगा, nothing can stop me. Okay, चलो. So who has a Marathi poem? Marathi poem है किसी के पास? Sukhna, can you send that poem to me on my WhatsApp so that I can read it out here? मला WhatsApp पर पाठव दो. If you have photo of that, that will be really nice. WhatsApp. Okay. कोई हिंदी वाला पोएम भेज दो मुझे और कोई इंग्लिश वाला पोएम भेज दो. I'm gonna take 3 assignments. हम करेंगे. अगर हिंदी वाला होगा तो मुझे WhatsApp भेजो, इंग्लिश वाला होगा तो WhatsApp भेजो. Somebody said this. तुम लोग पोएम वगैरह नहीं पढ़ते ना? We have कठिन है बाबा. ठीक है. Let me show this to you guys. मराठी समझता है ना सबको? Okay. पोएम. बापरे. तिचं हे आहे 2 दिवस. 2 दिवस वाट पाहण्यात गेले, 2 दिवस दुःखात गेले. अरे देवा. हिशोब करतो आहे राहिले डोईवर, किती राहिले डोईवर उन्हाळे. शेकडो वेळा चंद्र आला, तारे फुलले, रात्र धुंद झाली, भाकरीचा चंद्र शोधण्यातच जिंदगी बर्बाद झाली. वा. हे माझे सर्वस्व दारिद्र्याकडे
गहाणच राहिले, कधी माना उंचावलेले, कधी कलम झालेले पाहिले. सुंदर सुंदर. हरघडी अश्रू वाळले नाहीत, पण असेही क्षण आले, तेव्हा अश्रूच मित्र होऊन सहाय्यास धावून आले. दिस इज व्हेरी डिफिकल्ट फॉर मी. दुनियेचा विचार हरघडी केला, आता जगमय झालो, दुःख पेलावे कसे, पुन्हा जगावे कसे, यात शाळेत शिकलो. झोत भट्टीत शेकावे पोलाद, तसे आयुष्य छान शेकले. 2 दिवस वाट पाहण्यात गेले, 2 दिवस दुःखात गेले. माय गॉड. ओके, ठीक आहे. व्हेरी व्हेरी इंटरेस्टिंग पोएम. ये 10th के टेक्स्ट बुक में है। कन्वर्ट दिस इनटू अ स्पेस. तो इसके लिए पहले हमें समझना पड़ेगा कि ये है क्या. दोन एंड मैं इसमें से क्या पिकअप करूंगा वो भी मैं बताता हूँ. सो आई एम गोना डू अ पेंटिंग बेस्ड ऑन दैट, और उसके हिसाब से मैं उसका पोएम करूंगा, स्पेस करूंगा. 2 दिवस वाट पाहण्यात गेले, 2 दिवस दुःखात गेले. हिशोब करतो आहेत, राहिले डोईवर किती उन्हाळे. शेकडो वेळा चंद्र आला, तारे फुलले, रात्र धुंद झाली. भाकरीचा चंद्र शोधण्यातच जिंदगी बर्बाद झाली. हे हात माझे सर्वस्व दारिद्र्याकडेच गहाणच राहिले. ओके. कधी मना उंचावलेले, कधी कलम झालेले पाहिले. ठीक आहे. हरघडी अश्रू वाळविले नाहीत, पण असे क्षण आले, तेव्हा अश्रूच मित्र होऊन सहाय्यास धावले. दुनियेचा विचार हरघडी केला, आता जगमय झालो, दुःख पेलावे कसे, पुन्हा जगावे कसे, याच शाळेत शिकलो. झोत भट्टीत शेकावे पोलाद, तसे आयुष्य छान शिकले. 2 दिवस वाट पाहण्यात गेले, 2 दिवस दुःखात गेले. ओके. सो व्हाट आई, इसमें क्या होता है, I have this point, right? What I'm gonna do, I'm gonna derive a emotion from this, right? And then I'm gonna convert it into a building or a space. Now, when I look at that particular building, so this is मी माझं एक्सप्रेशन सांगतोय. ठीक आहे. You might have a different opinion about that, and this is where my creativity is different from your creativity or my response to something. So for me, this is a story of a person who has had a lot of hardships in life. जिसकी लाइफ में काफी हार्डशिप अब तक आ चुके हैं, और he is trying to explain or trying to express his emotions accordingly. Okay. And I don't think he is talking about a lot of stuff. He's not telling कि मेरे लाइफ में सुख भी थे और दुख भी थे. He is always talking about कि जसे माझे हात नेहमी दारिद्र्याकडे गहाण राहिले. So he has always been working. Maybe he was a slave to something or somebody. Particularly poverty का वो ये था. He is also saying कि कभी मुझे मैंने हमेशा नहीं, there were not times where I always cried, but ऐसा भी वक्त था कि सिर्फ जो आंसू हैं वही मेरे साथ में आए हैं. बट दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग लाइन दैट आई वांट. जैसे पूरा का पूरा मैं नहीं लेना, आई एम जस्ट टेकिंग वन पॉइंट. झोत भट्टीत शेकावे पोलाद, तसे आयुष्य छान शिकले. 2 दिवस वाट पाहण्यात गेले, 2 दुःखात गेले. At the end of the day, what he's trying to say कि मेरा जो life वो the journey was very hard, correct? Like a very hard kind of journey. जसं भट्टीत जसा पोलाद म्हणजे पोलाद इज स्टील बेसिकली. तो इसे कि जैसे भट्टी में पोलाद जाता है, द मोर यू हीट इट अप द मोर स्ट्रॉन्गर इट गेट्स. तो इसे कि मेरे लाइफ में अब तक बहुत सारे पेन था, हार्डशिप्स थे, ये था वो था, बट एट द एंड ऑफ द डे व्हेन आई लुक एट इट, आई रियलाइज कि वहां पे आई हैव हैड अ लॉट ऑफ हार्डशिप, बट इट इज समथिंग दैट मेड मी स्ट्रॉन्गर. दिस इज समथिंग, ये जो लाइन है जो आखिरी का, आई शो यू द लाइन. So I'm going to focus on these last 2 lines. झोत पट्टीत शेकावे पोलाद, तसे आयुष्य छान शिकले. 2 दिवस वाट पाहण्यात गेले, 2 दिवस दुःखात गेले. तो आई थिंक कि ये जो लाइन है, ये it's a happy line as well as a sad line actually. मतलब the intangible aspect that I have about this line is number 1 कि बाबा
जैसे लाइफ में मेरे हार्डशिप आते चले गए, मैंने उसको छाती पे लिया. आई वेंट थ्रू इट बिकॉज आई हैड नो अदर ऑप्शन. बट कहीं ना कहीं पे जब मैं वो एक्सपीरियंस कर रहा था, द वे आई वाज एक्सपीरियंसिंग दैट पर्टिकुलर इवेंट, मैं स्ट्रांग तो होता चला गया. आई बिकेम स्ट्रांग. उसमें से कुछ टाइम, हाफ जो मेरा लाइफ था, व्हेन आई वाज गोइंग थ्रू, आई वाज होपिंग that there would be a positive result at the end of the day. But when I, मतलब 2 दिवस वाट पाहण्यात गेले की अच्छे दिन आएंगे, अच्छे दिन आएंगे, अच्छे दिन आएंगे. एंड व्हेन आई फिगर्ड आउट एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, जब मैं वहां पे उस पॉइंट पे आया कि मैं आई रीच्ड एट सर्टन पॉइंट, जब मैं आगे देखता हूँ या जब मैं पीछे देखता हूँ, कुछ दिन जो थे, दे वर होपफुल दैट ओके, ऑलराइट, I'm gonna go through this and there is a light at the end of the tunnel that I want to go. But उसमें से आधे दिन मेरे राह देखते हुए गए और आधे दिन मेरे दुख में गए. So this is a very sad feeling, but I want to pick up a very kind of a positive feeling कि that person went through it, वो रुका नहीं कहीं पे. Okay, so how do we convert that into tangible thing? Okay, this is difficult, but let's try now. So what I'm gonna do, I discussed it with you कि मैं इसके बारे में क्या सोचता हूँ, and now we are going to try to put it in a type of a painting or a illustration or an abstract thing. तुम कुछ भी कर सकते हो, not an. So I'm gonna show you कि मैं इसके बारे में क्या सोचता हूँ, इसको कैसे किया जाना चाहिए. कितनी है? 3. कितना है ये? 3. अबे शून्य. 0 है सर. Okay, चलो. Let me read that again. दुनियेचा विचार. झोतपट्टीत शिरकावे पोलाद, तसे आयुष्य छान शिकले. 2 दिवस वाट पाहण्यात गेले, 2 दिवस दुःखात. ठीक आहे. This is something that I'm going to focus on. उसके पहले है झोतपट्टीत शेकावे पोलाद, तसे आयुष्य छान शिकले. सो आय एम गोना बी, आता याच्यामध्ये मी लाईक ओके, आय एम गोना ट्राय अँड डू माय बेस्ट. ओके, बट आय विल हॅव एक्सप्लेनेशन फॉर एव्हरीथिंग. 2 दिवस वाट पाहण्यात गेले, 2 दिवस दुःखात गेले. ठीक आहे. सो you can see this, right? I also want to show मी माझी प्रोसेस एक्सप्लेन करतो. ठीक आहे. सो दिस इज द पाथ दॅट ही हॅज बीन वॉकिंग अँड देर आर सो मेनी ऑब्स्टॅकल्स हिअर अँड देअर. तर हे मी कंटिन्युअस दाखवतोय. देन आय ऑल्सो वॉन्ट टू टेक अ व्हर्जन वेअर कधी माना उंचावलेले, कधी कलम झालेले पाहिले. सो कधी माना उंचावलेले म्हटलं, कधी मला गर्व झाला आयुष्यात आणि म्हणजे मला माझी मान वर झाली, आणि कधी माझी मान खाली पण झाली. सो maybe I can, what I can do is माझी मान वर झाली या केसमध्ये what I want to show is something like this maybe, where
and this हरघडी अश्रू वाळविले नाही पण असे क्षण आले. This maybe I also want to have शेकडो वेळा चंद्र आला तारे फुलले रात्र धुंद झाली भाकरीचं चंद्र शोधण्यातच जिंदगी बरबाद झाली. Maybe I can show like भाकरी सारखं मी फक्त स्केच करतोय जनरल स्केच मी करतो मी घेतली शेकडो वेळा चंद्र आला फुलले रात्र धुंद झाली. Maybe I have more of this भाकऱ्या over here. हरघडी अश्रू वाळवले पण असे क्षण आले तेव्हा अश्रूच मित्र होऊन सहावे असावे. झोतपट्टीत शेकावे पोलाद तसे आयुष्य छान शेकले 2 दिवस वाट पाहण्यात गेले आणि 2 दिवस दुःखात गेले. अजून काय शेकडो वेळा चंद्र आला तारे फुलले रात्र धुंद झाली. Okay. So maybe I can do this of darkness here. Yeah. Okay. All right. So can you see काय होत आहे. ओके. सो याच्यामध्ये मी पेंटिंग जर मला करायचं सुरुवातीला तर मग आता याच्यात 2 दिवस वाट पाहण्यात 2 दिवस दुःखात गेले. ठीक आहे. ओके. ऑलराईट. मेबी व्हॉट एल कुठे गेली मेबी आय कॅन डू दिस काइंड ऑफ सो ही नदी आहे त्याच्या अक्षरांची असं मी दाखवतोय. हात गहाण राहिले. हात गहाण राहिले मे बी असं पण दाखवू शकतो की हो मे कुठेतरी ओके ठीक आहे. लेट मी एक्सप्लेन. So this is the first phase that okay, clear, all right. So this is my final tangible kind of concept. Here we will drawing that. Okay. So what I'm going to do is I'm going to explain की मी काय conceptually विचार केलाय. So मी हे दाखवतो की हा जो path आहे हा नेहमीपासून येत राहतो. So it's a continue ही लाईन नाहीये. Continuously that path is coming. करेक्ट. आणि त्याच्यामध्ये देर इज नो स्ट्रेट वे. कधी हे असं पण आहे. सो नेहमी अट म्हणजे त्यांनी म्हटलंय ना की कधी हे आलं कधी ते आलं शेकडो वेळा चंद्र आला तारे फिरले रात्र धुंद झाले. कंटिन्युअसली सुरू आहे पण येट द होल पॉइंट इज हिअर. ही जी भाकरी आणि हे मी पिठलं झुणका भाकर असते माहिती तुम्हाला.
मी झुणका भाकर असं दाखवणार आहे, जस्ट एक एक्झाम्पल. ठीक. देन मग कधी कधी असं आहे की आधी तो असा 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 आला, बरोबर, आणि मग मे बी त्याला असं होतं की कधी वर बघितलं की जेव्हा हा असा बघेल, आता इट्स लाईक अ रॉक वॉल असते ना, ती रॉक क्लाइम्बिंग कशी असते. तर जेव्हा हा इतका मेहनत करून इकडे आला, जेव्हा इकडे आला तेव्हा त्याला वाटलं की यार आता मला वर बघायचं आहे. मग कधी इकडे वर बघायचंय, कधी खाली बघायचंय. तर यू सी इकडे मी थोडा मे बी विंडो वगैरे किंवा ही लाईन नसेल, ही जी वॉल आहे ही नसेल. सो ही इज फ्रॉम ऑल दिस ही इज कंटिन्युअसली लुकिंग ॲट दिस, कंटिन्युअसली तिकडे बघतोय. त्यासाठी त्याला धडपड करायला लागते. मग कधी त्याचा पाथ चेंज होतो, म्हटलं कधी वर बघायला लागतं, म्हटलं कधी खाली यायला लागतं, बरोबर. मग इकडे मी असं केलंय की हा इकडे आला, बरोबर. आता इकडे एक लाईन आहे का हरघडी अश्रू वाळले नाही पण असेही क्षण आले, अर्थात तेव्हा अश्रूच मित्र होऊन सहाय्यास धावून आले. आता इकडे कसं केलंय मी की हा असा आला आणि इकडे असं एक वेल आहे, बरोबर. ज्याच्यामध्ये ही हाईट म्हणजे इतकी ती हाईट आहे. तर त्याला जर पुढे जायचंय तर त्याला इकडे त्याचे अश्रू गाळून गाळून ते भरायला लागेल आणि त्याच्यानंतरच तो इकडे यू यू मैत्रिय माईक ऑफ कर तुझा प्लीज. ओके. मग कधी त्यांनी म्हटलं की अंधार पण आले, आता त्यांनी इकडे म्हटलं की भाकरीचा चंद्र शोधण्यात रात तारे फुले, तुम्ही इकडे अंधार केला आणि देर इज ऑलवेज सम काइंड ऑफ अनसर्टनिटी इन हिअर. तर मग मी असं केलं, दिस इज द एंड ऑफ पोएम. मैत्रिय यू नीड टू युअर माईक. करेक्ट. आणि मग तिकडून बोलले की उठा उठा साप आहे. अरे हा, मी असं बघितलं तो इथं माझ्या समोर. सो असं आहे, मी इकडे असं दिलं की कुठे येते हे हात माझे सर्वस्व दारिद्र्याचं गहाण राहील. इकडे मी काय कन्सेप्ट लावलाय का, लेट्स से त्याला इकडनं जर इकडे जायचंय बिकॉज दिस इज द ओनली प्लेस त्याला तिकडनं त्याची भाकर मिळेल कंटिन्युअसली. इकडे जर तो असा चालत आला, कारण ही रोप आहे, तर त्याला लाईफमध्ये बॅलन्स मेंटेन करायला कंटिन्युअसली हातात ती जी लाकड असते, लाकडाची काठी असते, ती धरावी लागेल. बट जर तुम्ही ती सोडली आणि तो हे पकडायला गेला तर तो याच्यात पडेल आणि इकडनं. सो दिस इज लाईक अ जर्नी ऑफ द एक्सपिरियन्स ऑफ द पोएम. करेक्ट. तुम्ही आधी पेंटिंगच्या फॉर्ममध्ये केलं, आता माझी पेंटिंग स्टाईल अशी आहे की मी 2D आणि 3D थोडं मिक्स करून गोष्टी करायचा ट्राय करतो. सो दिस इज अ काइंड ऑफ एक्सपिरियन्स. म्हणजे त्याची लाईफ बद्दल जर मी विचार केला तर दिस इज समथिंग दॅट आय गेट. आणि आय थिंक ॲट द एंड ऑफ द दिस इज अ सॅड पोएम. त्याच्यात म्हणजे त्याच्यात पोएममध्ये असं कुठेच म्हटलं नाही की तुला सुख भेटलंय. सो इट मिक्स ऑफ हार्डशिप. नाही तो इकडे येतो जिकडे तुला शेवटी त्याचं ते हे मिळत नाही. तुम्ही कुठेही बघा, ही ऑलवेज हॅव हिज आईज फिक्स्ड हिअर. सो दिस इज अ काइंड ऑफ अ पेंटिंग. आता इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे इन अ स्पेस. So maybe I think I have more or less what is here. So maybe सुरुवातीला म्हणजे like a maybe I can design it as a puzzle or a maze. So सुरुवातीला मी असं केलं की इकडनं मी सुरुवात केली, बरोबर, इकडनं त्याची एंट्री. मग इकडे देर आर लॉट ऑफ हार्डशिप्स. तर तुम्ही तुला दाखवतो तिकडे काटे आहेत असे, मग अचानक जसं हे हा जो कन्सेप्ट आहे मी म्हणतो की त्याला असं आणलं. सो हिज डिरेक्शन इज ऑल्सो ऑलवेज चेंजिंग. मग अचानक हे असं आलं, इकडे रॉक क्लाइम्बिंग आहे, इकडे मग आपण थोडं पाणी पण टाकू शकतो थोडे त्याचं हे अजून वाढवायला. आणि मग देन इकडनं एक हलकासा हे आहे जिकडनं म्हणजे टाईट रोप आहे, बट इकडे मी दंडा पण ठेवलेला आहे. अँड देन इट ड्रॉप्स डाऊन टू समवेअर अराउंड हिअर, जिकडे जोपर्यंत ह्या ग्लास जोपर्यंत तू त्याचे जोपर्यंत तो पाण्यात डुबत नाही स्वतः, म्हणजे इकडे आपण नळ वगैरे देऊया असं काहीतरी. अश्रू तर आपण अश्रूंनी पॉसिबल नाही आहे, किंवा थोडं पाणी देऊया इकडे, बरोबर. आणि इकडे तो आला, देन इकडे देन फ्रॉम हिअर ही एंटर्स इन टू अ डार्क रूम, एक्स्ट्रीमली डार्क रूम. आणि तिकडनं तो
खाली पडतो धप्पकन, आणि मे बी दिस कॅन बी समथिंग, म्हणजे मे बी याला मी इकडे ट्रान्सफर करतो. इकडे ग्लास आहे आणि इकडे त्याची ती भाकर वगैरे जे काही आहे किंवा पाणी आहे त्याचं, कारण एवढा माणूस एकदम थकून जाईल ना, तर इकडे मी पाण्याची बॉटल ठेवलेली आहे, बट इकडे ग्लास आहे, सो ही स्टील कांट गो देअर. तर दिस वुड बी द एक्सपिरियन्स ऑफ दॅट पोएम, की जर त्या माणसाने जी कविता लिहिलेली आहे त्या माणसाचा एक्सपिरियन्स थ्रू जर मला घेऊन जायचं असेल कोणाला, तर मे बी आय डिझाईन a space, something like this, space or an experience or a path. So you have to design the experience. इसमें त्याचं पुढे मागे काय, आता इकडे मी ही टाईट रोप असं इकडनं, की त्याला इकडनं उडी मारायची आहे, बरोबर, आणि तो या पाथवेवरनं जरी इकडे आला, कारण फ्रॉम हिअर इकडे डायरेक्ट झाला हे आहे, बट जर तू इकडनं उडी मारेल तेव्हाच तू इकडे जाईल, बट त्याच्यावर चालत जायला तुला ती हे लागेल, काठी असते ती करायची. तू जर इथपर्यंत आला आणि इकडे जरी गेला तरी ही कॅनॉट वॉक हिअर, तर ठीक आहे, ही इज नॉट, त्याला कधीच इथपर्यंत निघता, म्हणजे त्याचा जे फायनल एंड आहे, जे एक सुख आहे, जे आपण या केसमध्ये पाण्याच्या बाबतीत केलंय, ते त्याला कधीच भेटणार नाही. सो दिस इज द एक्सपिरियन्स. म्हणजे वेन समबडी गोज स्टार्ट फ्रॉम हिअर अँड इट गोज अँड एंड अप्स हिअर, बरोबर, व्हॉट विल हॅपन इज तिची तो जो एक्सपिरियन्स आहे त्या पर्टिक्युलर पोएमचा, तो मी इंड्यूस करू शकतोय whoever will pass through this. So this is how conceptually emotions are valid. तर जेव्हा म्हणजे द एंड गोल इज की फॉर एक्झाम्पल मी इकडनं स्टार्ट केला आणि तो इकडे पर्यंत, इकडे जेव्हा तो जाईल तेव्हा त्याला त्या पोएमचा खरा अर्थ कळायला हवा. दिस इज द होल आयडिया. ओके, मी जस्ट एक्झाम्पल दिलं. लेट्स टेक अनदर वन. नॉट बॅड, छान केलं. Okay, so let's take another one. Right? Let me start with the. एक अजून घेऊया कोणाची पोएम आहे. प्रज्ञाची घेऊया. Pragna, you're okay if I share this with people, right? You are the edge of the water rolling up on the beach. You know the struggle of sand, your desires you may never reach. Okay. Yet you continue to conquer the lands, but I tell you now, enjoy the climb, the feel, and the fall. Because secretly you are the entire sea. Wow. And within you, you have it all. Okay, let's try this. Try करूया. Now, let me read it again for you. You are the edge of the water rolling out to the beach. Okay. You know the struggle of the sand, your desires you may never reach. Okay. Yet you continue to conquer the lands, but I tell you now, enjoy the climbs, the feel, and the fall. No? Yes. Because secretly you are the entire sea, and within you, you have it all. Okay. Let us see कि हम क्या कर सकते हैं इसके साथ. हे मराठी पण आहे का? You are the आता, so this is the poem. Given or directed at the sea, correct? त्याचं असं म्हणणं आहे का? Let me try to do this poem and let me explain. The way I'm gonna design this, or the way I'm not thinking about मी ती space कशी design करणार. I'm going to try to think about की सगळं आहे काय. So what I'm gonna do is I'm going to take a draw. This, okay, and maybe this is the sea, right?
and I'm also going to draw ते पाणी थेंब पडला की ते उडतं तसं. आणि त्याच्यामध्ये इकडे असं पण दिलंय, you know the struggle of the sand, your desire you may never reach. Okay. Yet you continue to conquer the lands, but I tell you now, enjoy the climb, the feel, and the fall. Okay, all right. Because secretly you are the entire sea, and within you, you have it all. So what I'm gonna do conceptually, right? So the poem says ki the setting is ki maybe I'm not wrong. मी माझं स्वतःचं याच्यावर इम्प्लिकेशन लावतोय की हा जो कवी आहे त्यांनी ही कविता लिहिलेली आहे याच्यावर, म्हणजे सपोज समुद्र आहे आणि हा कवी जो आहे तो इकडे उभा आहे आणि तो याला म्हणतोय की बाबा तू लँड कॉन्कर करायचं ट्राय करतो आहे आणि रोलिंग अप टू द बीच, राईट? यू आर एज ऑफ द वॉटर, यू रोलिंग ऑन अस टू द बीच, यू नो द स्ट्रगल ऑफ द सँड, युअर डिझायनर यू मे नेव्हर रीच. म्हणजे तो म्हणतो की यू मे नेव्हर रीच युअर हो, म्हणजे तुझं जे डिझायर आहे की तो पूर्ण अर्थला कव्हर करायचं, दॅट यू मे नेव्हर रीच. हे माझं इंटरप्रिटेशन आहे. इट माइट बी रॉंग, आय एम नॉट, मी याच्यात कुठेच हे घेत नाही की हे एक्झॅक्टली असंच बरोबर आहे. येट यू कंटिन्यू टू कॉन्कर. तो कधी वेव्स कंटिन्युअसली येत राहतात, तो कधी थांबतो का? नाही. द लँड्स, बट आय टेल यू एन्जॉय युअर क्लाइंब, करेक्ट, your feel and the fall. This is the community, you have to enjoy this because secretly you are the entire sea. Maybe he's talking to the leher. The wave is the entire sea and within you you have it all. Okay, now so maybe what I do, मी थोडं इंटरप्रिटेशनचं वेगळं करतोय. मी याच्यामध्ये कसं करणार आहे का, आणि then I'm gonna draw, you have it all म्हटलंय ना, मी याच्यामध्ये I'm gonna draw the earth like this over here, and yeah, something like this of a painting I will do. Okay, याच्यामध्ये you can say की हे बरोबर आहे, चूक आहे. I'm not gonna go like that. I'm mostly relate, मी माझ्या स्वतःच्या इंटरप्रिटेशनवर फोकस करतो. Okay? So now I have this painting. Maybe what else I can add is okay, something like this. Okay. Now how do I convert that into the field? So मी हा असा ड्रॉप घेतला आणि then I relate to that. The way I'm going to design it is like this. I'm gonna take help a little bit of it actually. So what I'm gonna do, me the environmental design करतो. So what I do is I design like a pool of water which is huge, extremely huge, and then so yeah, space, yes, ही जी space मैंने घेतली आहे, because at the end of the day this is a very, according to me, my interpretation, right? मला वाटतं की ही खूप रिअश्युरिंग पोएम आहे, ही खूप स्वतःला स्ट्रेंथ देणारी पोएम आहे. सो व्हॉट आय गोना डू, आय एम गोना कन्वर्ट, डिझाइन द स्पेस बेस्ड ऑन दिस, विच इज लाईक अ मेडिटेशन काइंड ऑफ स्पेस. सो मी, यू कॅन टेक अ सर्कल ऑल्सो हिअर, नॉट एन इश्यू. मी इकडे रेक्टँगल दिला म्हणून इकडे रेक्टँगल मी घेतला, आणि देन दिस इज द meditation space. And what I want to do is actually इकडे सगळं पाणी आहे ना, what else is there? You are the fall and you are the feel. Everything is within you. Okay, I think I'll be done with this. So this is the space जी मी याच्या बेसिसवर काढली आहे. So what I want, because the end line, this is something that I really feel very positive about. That and within you, you have it all. Correct? So this is what I'm focusing. आणि मी हे इकडे केलेलं आहे. So what I want, what experience, what I want the
user to have to come here and meditate and figure out that whatever you are, I mean, you should always have your high ups and low. You can always have your ups and low. You can always have your struggles. You can always have your desires that you may never reach. You and you try and you fall and you this and you that. But at the end of the day, you have to realize that everything is within you, and you can realize this when you are within when you come and you sit at this place. You realize that, okay, everything is within me, so nothing outwardly is important. Whatever important is inwardly. आता याच्यामध्ये तुम्ही त्याला थोडं वेगळं फॉर्म पण दिसतो, जो आपण हा फॉर्म घेतला होता, लाईक अ ग्लास स्फिअर वेअर यू कॅन सी एव्हरीथिंग. लाईक असा तो ह्याचा जो शेप आहे टीयर, तुम्ही असा घेतला आणि तो असा केला, तुम्ही असा लावतो एक ओनियन शेप डोम और समथिंग. I can see everything, but I know that everything is within me. So this is like a meditation space that I have designed. So it can be as simple as possible. इतना भी simple हो सकता है, but there is a reason that why I'm doing it, correct? And मला त्याला why I chose water, because मला ते पाण्याचा जो इफेक्ट होता तो इकडे दिसतो. What I can also do is मी याला थोडं या टाईपने घेऊ शकतो की ज्या लहरी आहेत त्यापर्यंत येऊ शकतात. सो वॉट एव्हर एक्सपिरियन्स द poet is trying to give, तो त्याला पण हलका हलका येतो आहे, but it never touches. It never, when you come to this place, nothing can disturb you or distract you, so that you can finally realize that because secretly you are the entire sea, and within you you have it all. So this is a meditation space that I have designed. Let's take another. Is this okay? Let me ask you one question. Could you give me कळते का तुम्हाला पण? हो सर. हो. ओके. खूप हेवी होत आहे का? नाही. नाही. एक मराठी कोणाची आहे? एक मिनिट बघू. अच्छा, मराठी तर घेतली होती आपण ना? ठीक आहे. ओके, आय थिंक कॅन वी कलर इट. हाँ, मी सांगतो. ठीक है. सो ये तो दिस इज समथिंग दैट आई डिड इन लाइक 15-20 मिनिट्स, बिकॉज मला ही सवय आहे छोट्या छोट्या गोष्टी करत राहायची. You might have done this, you might not have done this, you might be doing this that you understand एखादा concept tangibly, intangible concept tangibly कसा convert करायचा. ठीक आहे. What you want to do? You have your poems with you. Okay. Yes. You have to first try to understand की या पोएम मध्ये म्हणायचं काय. वर्बली घेऊ नका. त्यांनी म्हटलं की चंद्रतारे आहे तर चंद्रतारे दाखवा, एक 15 मिनिट अजून. त्यांनी म्हटलं की चंद्र आहे तर चंद्र दाखवा, त्यांनी म्हटलं की पाणी आहे तर यू कॅन टेक इट लिटरली, बट नॉट एव्हरीथिंग हॅज टू बी टेकन लिटरली, बिकॉज कविता इज नॉट अ डिस्क्रिप्शन. त्याला काहीतरी मेटाफॉर असतो, त्याला काहीतरी हिडन मिनिंग असतं. तुम्हाला तो मिनिंग समजायचा आहे. देन यू हॅव टू डू अ पेंटिंग जो तुम्हें कलर भी करना है. ओके. सो ट्राई टू डू इन वॉटर कलर और पोस्टर कलर. डोंट फील की ये सही है की गलत है. यू डोंट हॅव टू डिझाईन ऑलरेडी. तुम्हाला ते स्ट्रक्चर डिझाईन नाही करायचं आहे, तुम्हाला ते बिल्डिंग डिझाईन नाही करायचं सुरुवातीला. फर्स्ट यू हॅव टू डू पेंटिंग जे एक्सप्लेन करेल की अर्थ काय त्या पोएमचा. ओके. याचा तुमच्या हिशोबाने इंटरप्रिटेशन होऊ शकतो. सो मे बी इफ आपण दोघांनी कोणी पण मे बी प्रज्ञाने आणि मी सेम म्हणजे सेम पोएम घेतली, बट माझं इंटरप्रिटेशन या गोष्टीचं कम्प्लिटली वेगळं असू शकतं, तुमचं इंटरप्रिटेशन वेगळं असू शकतं. याच्यामध्ये काही चूक नाही. करेक्ट. आणि त्या पेंटिंगचा हे घेऊन त्या पेंटिंगला म्हणजे बिकॉज दिस इज द पोएम, राईट. यू टेक आउट द फिलिंग, यू टेक आउट द इमोशन, correct, and then you take that and then you convert it into a tangible structure. It has to be an experience, it has to be a space, it has to be a journey, correct. So जे पोएम मध्ये आहे तो जो इमोशन आहे तो तुम्ही एक्स्ट्रॅक्ट करा आणि एक असं स्ट्रक्चर डिझाईन करा जे ते इमोशन तुम्हाला देऊ शकेल जे त्या पोएम मध्ये सांगितलेलं आहे. ओके. इसको कलर कर सकते हो, इसको शेडिंग भी कर सकते हो, बट ट्राई करो कि एज अ पेंटिंग करो. बट पेंटिंग मतलब एकदम स्केच मत निकालो, या फिर
ठीक है, यू डू व्हॉट यू वॉन्ट टू डू, बट ऍट द एंड ऑफ द डे इमोशन हॅज टू बी देअर, की तुम्हाला कळायला जसं एक 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 हे घेऊया सानियाने दिलेली, अल्लड झुळझुळ पाण्यासारखी अलवार काडी पडणाऱ्या सुरेल गाण्यासारखी. वाव, ओके. सो इसका मतलब तुम आई डोंट नो कैसे करोगे, यू डू डिजाइन ऑन योर ओन, यू हैव एवरी फ्रीडम दैट यू वांट. तुम किसी भी, अगर तुम चाहो कि तुम्हारे स्ट्रक्चर, जहाँ पे तुम्हारा स्ट्रक्चर है, तुम्हारी स्पेस वहाँ पे ग्रेविटी ना हो, ओके. अगर तुम चाहते हो कि somebody who enters your space, उसके सिर्फ आंख और कान पे पट्टी बन जाए, मतलब दिस सेंस एंड दिस सेंस इज गॉन, दैट्स ओके. अगर तुम ऐसा चाहते हो कि द स्पेस हैज टू बी एक्सप्लोर्ड यूजिंग ओनली टेक्टाइल फील्ड, वो भी चलेगा. अगर तुम ये चाहते हो कि ये जो पोएम है वो सिर्फ छोटे बच्चों के लिए, तो वो भी चलेगा. एवरीथिंग इज पॉसिबल, देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन कि किस तरह से किया जा सकता है. बट पोएम extract the emotion, make a painting, and then whatever emotion that the painting induces, you have to design a structure, or have to design a space जो वो पेंटिंग या जो पोएम है वो तुम्हें दे रहा है. सो दिस इज कॉल्ड डेवलपिंग फ्रॉम अ कंसेप्ट. दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग एक्सरसाइज. तुम बहुत ज्यादा सीखोगे, तुम किस तरह से सीखते हो उसके बारे में भी सीखोगे. तुम ये भी सोचो कि तुम इंटरप्रेट, पहले तो तुम्हारा इंटरप्रिटेशन किस तरह से है, तुम किस फॉर्मेट, क्योंकि आई interpret things based on my emotions or my experiences. You might have different experiences, you might have different memories, obviously, so your interpretation can be different, but trust me, very interesting exercise. You're going to learn a lot from it. Okay, so this is something that we have to do. Okay. ओके. हा. आय होप की सगळ्यांकडे तुमचे तुमचे पोएम आहेत. आता फक्त पोएम चेंज करू नका. आता तुमच्या हिशोबाने ती पोएम चेंज नका करू, जी आहे तीच घ्या. थोडासा डोक्यावर ताण पडू द्या की यार याचा अर्थ काय आहे, मला समजू दे काय आहे कसं आहे. देन वी आर गोना डू. The next lecture that we are going to do is also going to be based on architecture, and we are going to see how architecture impacts other people's life and how we can design something that is going to be helpful for society. Okay, clear? Okay. तुम्हाला काय अखिलेश सर म्हणजे 2 ड्रॉइंग काढायचे नाही. फर्स्ट ड्रॉइंग जे पेंटिंग आहे ते तर तुम्हाला पेंटिंग फॉर्म मध्ये करायचंय. सेकंड जे आहे म्हणजे हे जे आपण घेतलं होतं, इट कॅन म्हणजे दिस इज माय पेंटिंग, करेक्ट, and this is my sketch of that structure. जैसे my painting, इसको तुम्हें प्रॉपर कलर वगैरह करना पड़ेगा. and this is the sketch. Sir, should we use semiotics? What is semiotics? Let me search what is semiotics. I think I know what is semiotics, but I just want to be sure कि semiotics क्या है. Semiotics. Yeah, you can use semiotics. I got the semiotics guy, but don't make it a diagram. जे पहिलं जे तुम्ही करताय ना, the first thing that you are gonna do, the painting, don't make it a diagram. Make it a painting. Make it like असं आर्टवर्क वाला फीलिंग आलं पाहिजे त्याच्यात मला. तर काही मजा है. उसको एक्सप्लेन मत करो, उसको डायग्राम की तरह मत बनाओ. उसमें ये है, ये है, ये है, सिर्फ लिखो मत कि हाँ ये. Don't. It should not be a diagram. It has to be a painting. It has to be done in an emotional manner. Right? और कुछ? No? Okay. अगर कुछ डाउट होगा तो you have my number. You can always contact me. और ये सबमिशन हमें देना है परसों तक. ठीक है? काफी कम लोग हैं आज. ठीक है, चलेगा. I have recorded the lecture. मैं तुम्हारा YouTube पर टाकूं थोड़ा वेळ पाठवून. Are we good? यस. ओके, ठीक है, चलेगा. यस. थोड़ा सा सोच के करो, है ना. ऐसे
दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग एक्सरसाइज, बहुत कुछ सीखोगे तुम इससे. चलो, ओके, आई विल टेक योर लीव हियर टुडे एंड आई विल सी यू द डे आफ्टर टुमारो. ओके, कल आर्किटेक्चर वाला लेक्चर शाम को होगा 5 बजे. 3 पॉइंट पर्सपेक्टिव जो मिलेगा वो हम शाम को दिखाएंगे. चलो, ओके, Okay. ठीक है, Bye. बाय बाय.